Dear friends, in first 4 lectures we are discussed about so many formula. JEE मैथमेटिक्स के लिए हमने बहुत सारे फॉर्मूला फर्स्ट 4 लेक्चर में डिस्कस किए. इसके बाद नेक्स्ट we are starting with the first topic, set theory, which are related with JEE. आपके पास 11th और 12th में मिला के जितनी भी टॉपिक्स है वो सब टॉपिक्स में JEE में जो इम्पोर्टेंट पार्ट वाले टॉपिक्स है वो तो रहने वाले थे. इसके अलावा ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो JEE के एग्जाम में वो लोग कंसीडर नहीं करते. बट सेकंड थिंग, इट इज नॉट इन आवर हैंड. इट इज नॉट इन आवर हैंड. द रीजन इज हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि ये टॉपिक रहेगा कि ये नहीं रहेगा. बट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ लास्ट 5 years और लास्ट 10 years, observation of last 5 years or last 10 years, टोटल जितने भी JEE के क्वेश्चन पेपर थे उसमें से कहीं ना कहीं जगह कोई ना कोई साल पे कभी ना कभी सेट सीरीज के क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं, लेकिन कोई बात उसका एक भी क्वेश्चन आ गया और आपको आ गया तो आप इजीली उसके मार्क्स कवर कर पाओगे. सो हमारा इंटेंशन एक ही रहेगा डियर फ्रेंड्स कि जब भी हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उससे अननोन नहीं होने चाहिए. जो हमारे बुक में जितने भी टॉपिक है वो तो हम पढ़ने वाले हैं ही. हमको ऐसे समझ के नहीं चलना है कि चलो ये टॉपिक ये नहीं आता है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है. We have the sufficient time. Okay, that's why we complete all the topics of textbook. कि जितने भी चैप्टर्स है इसके सब टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं. इसके बाद एक नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं सेट थियरी. सो सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म. ओके, दैट मींस सेट की कोई डेफिनेशन नहीं, इट इज अनडिफाइंड. Now there are two methods of expressing the set. First one is listing method. Which one is listing method? इसमें आपको कर्ली ब्रैकेट में सपोज 1 2 3 4 and second one is property method. कौन सी मेथड? प्रॉपर्टी मेथड. तो मान लो कि दोनों का रिलेशन कैसा है, लिस्टिंग मेथड और प्रॉपर्टी मेथड. तो अगर आपको लिस्टिंग मेथड प्रॉपर्टी में जाना है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट 4 नेचुरल में आप ऐसे लिख सकते हो x plus that x belongs to n where x is strictly less than 5, or you can something like that. The first 4 natural number, the first 4 natural number, that means this is the property method. So what is the difference between listing and property? So listing method and property method, तो दोनों में लिस्टिंग में आपको मैथमेटिकल फॉर्म से जाना है. प्रॉपर्टी मेथड में आपको कोई एक जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको एक फॉर्मेशन के फॉर्म में यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको लिखना है. दैट इज फॉर द प्रॉपर्टी मेथड. पर्टिकुलरली सपोज आप ऐसा लिखो लिस्टिंग मेथड कि सिंगल सम सेट 2, दैट इज द लिस्टिंग मेथड. अगर इसको प्रॉपर्टी में लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं द नंबर which is the only number which is even prime number. Okay, this is the even prime number. This is the property method. Okay my dear friends, तो यहाँ पे आपके पास दो बात हुई, लिस्टिंग और प्रॉपर्टी दोनों की. अब आप आगे देखो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसे पूछोगे तो हमने टेक्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ लिया. ओके, मैंने आपने चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन मैं पूरी चैप्टर की आपको 1 या 2 लेक्चर में पूरी चैप्टर की समरी दे देता हूं. देन आफ्टर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू. ओके, यहाँ पे मैंने जो लिखे वो इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले से बताया
सबसे पहले आप all are familiar with N, Z, Q and R. N is the set of natural number, Z is the set of integer, Q is the set of rational number, that is of the form P by Q. This is P by Q, where P belongs to Z and Q belongs to N. Right or not? Why we write Q belongs to N? Because N starts from 1, 2, 3. और यहाँ पे आपका Q कहाँ पे रहता है? डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर रहता है मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. That's why denominator must be non-zero. That's why it is a rational number and R it is real number. So from all this set we can say that N subset Z subset Q subset R. What is subset? You know, मान लो कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, suppose A that is one element, set B is two elements. The elements of set A regarding set B, then we can say that A is a subset of B, right or not? Okay, so N के सब एलिमेंट Z में, Z के सब Q में, Q के सब R में. So R is the biggest set among all these sets. Okay, ये बात हुई सेट की, चार सेट. इसके अलावा आपके पास एक भी सेट है कि जो नंबर रेशनल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. So irrational number is defined as in terms of x is not equal to p by q. The number in the form p by q is called rational. इसके अलावा जितने भी नंबर है all are irrational. Okay. So friends, यहाँ पे total 4 sets N, Z, Q and R. That is the basic property of best. Now all you are familiar with singleton set. The set has only one element is called singleton set. In empty set में रहेगा set which has no elements is called empty set. फिर इसके बाद रहेगा non empty set. Set consisting only one element is called non empty set. फिर इसके बाद सबसेट जो मैंने आपको बताया. लेकिन सबसेट में आपके पास दो टाइप के सबसेट आपको याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट. इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट. What is improper subset? तो as for example मैं आपको बताऊं कि आपके पास suppose दो एलिमेंट्स हैं. The set A has two elements, 1, 2. The number of elements in set A is 2. So therefore, what is subset of this set? So singleton set 1, singleton set 2, singleton set 1, 2 and null set. तो यहाँ पर टोटल कितने सबसेट्स हुए? और इसमें से if any set has two subsets, the set itself, please, if any set has two subsets, the set itself and null set is called improper subset, and the rest of the subsets are exist and is called a proper subset. Clear? Benefit is again, अगर कोई भी set है इसके दो subsets करेंगे, null set and the set itself. Null set and the set itself, which is called improper, and if any of the subsets are exist, then it is called the proper subset. Okay. Second thing, आपको एक important बात याद रखनी है कि every set is a subset of its set, and null set is a subset of every set. This is the most important statement that you have to remember, that every set is a subset of itself and null set is a subset of every set. Okay, तो आपको कोई भी सेट से अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करने तो आ जाएंगे. सिंपल है, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर फाइंड करना है तो कोई भी सेट से पूरे सबसेट लिख दो. अगर प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, इसमें से दो सबसेट निकाल दो. कौन कौन से? The set itself and
First one is the set itself, second one is null set. But in exceptional case, if your set is the null set, then it has only one subset, that is the null set itself. Mind that is the null set itself. Okay? Now, next one is, my dear friends, my next statement is, if there is an element in set A, मैंने भी आपको बताया, either A, B and C, the number of elements in set A is 3. Number of elements in set A is 3. So how many subsets of set A? The first one is A, B, C. After AB, BC, CA, then after ABC, and then after null. तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला है? तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है 2⁻3. क्या है? 2⁻3. क्यों? क्योंकि n एलिमेंट्स है तो 2⁻n. यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, that's why it is 2⁻3. But 2⁻3 is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि इसमें से मेरे को प्रॉपर सबसेट चाहिए, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 8. इसमें से प्रॉपर चाहिए तो 2 इम्प्रॉपर निकाल दो, वन से नल सेट और ये बाकी के जो रहेंगे 6 which are proper and 2 is improper. 6 one is proper and it is improper. Okay, so clear? Read out. Okay, very good. So dear friends, we have discussed proper and improper subsets of any set. Now next one is, मैंने जो अगर आपको बताया कोई भी सेट के अगर प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं तो आपको टोटल सबसेट से 2 सबट्रैक्ट करना है. You have to subtract 2 from the total subset of set A. Now number of improper subsets of an empty set is 1. मैंने भी आपको बताया. Number of improper subsets of an empty set is 1. That is the null set is set. What is number of proper subset is 0, and number of proper subset is 0 because the reason is, अच्छा आप बताओ कि चलो null set इसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 0. null set में कितने रहेंगे? 0. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2⁻0, that is 1. 2⁻0 is 1. Okay, तो इसमें 2⁻0 is 1. null set में इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. एक भी एलिमेंट नहीं है, that means इसके कितने सबसेट हैं? तो 5 set. The element is 1. So number of proper subset is 0. इसका एक ही improper subset है. So proper subset is 0. Okay. Dear friends, all you are familiar with subset. If A and B are 2 sets, any elements of set A which are in elements of set B, then A is a subset of B. If A is a subset of the elements which are in A, all the elements of set A are in B, then A is a subset of B. But in other case, in reverse side, if A is a subset of B, then B is called a superset of A. That is the most important statement for us. If A is a subset of B, I give you one example as for it is 4, 5, 6. Either B is 1 to 8. So here A is a subset of B. So here A is a subset of B. That means B is a superset of A. B is a superset of A. Now next one. This is the power set. What is power set? My dear friends, for any set A, the set consisting all the subsets of any set A is called the power set of A. For any set A, the set consisting all the subsets of A is called the power set of A. That means, अब observe करो कि
सेट की डेफिनेशन और पावर सेट की डेफिनेशन, देयर आर स्लाइड वेरिएशन बिटवीन दीस टू डेफिनेशन। मैं आपको बताऊं, एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके पास दो एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, total number of subset is 2 raised to 2, that is 4, because here the formula is 2 raised to n, but here is 2 raised to 2, that is 4, right or not? So 2 raised to 2 is 4. Now here total 4 subsets कौन कौन से हैं? A, B, फिर AB, फिर null set, ये चार इसके सबसेट रहेंगे। अब सोचो ये डेफिनेशन मैंने जो लिखी है, देखो ये बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स वन मोर टाइम। फॉर एनी सेट A, the set consisting all the subset of set A, the set consisting all the subset of set A, the set consisting all the subset of set A is called the power set of A. Is called the power set of A. इसके बाद that is denoted by P of A. If there are n elements in set A, then the number of elements in power set of A is 2 raised to n. देखो, if there are n elements in the set A, if there are 2 elements in set A, then the number of elements in power set of A is 2 raised to 2. Here 2 raised to 2, that is 4. 1, 2, 3, 4. That is the element. Now it is an element. पहले वो सबसेट ले लेकिन इसको एक सेट में लिख दिया। There are total 4 elements. ओके, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, and number of subsets of power set of A will be number of subsets of power set of, इसके कितने सबसेट रहेंगे? तो 2 raised to 2, that is 2 raised to 4, that is 16. देखो, अगर कोई भी सेट है, मैं सिंपल बताऊं, कोई भी सेट में n एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने आएंगे? 2 raised to n divided by p. So p is 2 raised to n is the subset of set A. Now next one is number of subsets of, what is the number of subsets of this power set of A? It is 2 raised to p, that is 2 raised to 2 raised to n, that is 2 raised to, यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट्स है, so it is 2 raised to 4. So dear friends, इसकी पूरी समरी क्या रहेगी? तो मैं आपको बता दूं कि there are n elements in set A, then the number of elements in power set of A is defined in terms of 2 raised to n. Power set of A में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 2 raised to n. लेकिन पावर सेट ऑफ A में इतने एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट कितने रहेंगे? तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स. So again using the same formula applied over here, it is 2 raised to p. P क्या है? The number of elements in set A. It is in power set of A is 2 raised to n. That is 2 raised to 2 raised to n. So आपके पास है यहाँ पे 16 सबसेट. देखो पहले मैंने ब्रैकेट दे दिया तब तक ये सबसेट था. अब मैंने ब्रैकेट दे दिया तो एलिमेंट बन गए, तो फिर इसके सबसेट लिख देंगे. तो टोटल 4 एलिमेंट्स है. तो again we go with 2 raised to n. 2 raised to 4 is 16. Okay. Now power set never an empty set. Why? Power set आपका कभी भी empty set नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम at least एक एलिमेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि null set is a subset of every set. Null set is a subset of every set. So that's why from this statement power set is never an empty set. पावर सेट कभी भी empty set नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि पावर सेट में क्या रहेंगे? The set consisting all the subsets of set A, all the subsets of set A. मान लो कि A is a null set, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, no elements, एक भी एलिमेंट नहीं है. तो इसके पावर सेट में अगर आप लिखोगे पावर सेट ऑफ A, आपको लिखना है सिंगलटन सेट 5, सिंगलटन सेट 5. ओके, इसके सबसेट रहेंगे because R is a subset of itself. R is a subset of itself. So it is a never an empty set.
नाउ डियर फ्रेंड्स, अब हमको डिस्कस करना है थोड़ी इंटरवल के बारे में। और यू आर फैमिलियर विद closed interval, open interval, open close interval, so many intervals. So first of all, मैं आपको बताऊं closed interval. What is closed interval? Now closed interval is defined in square bracket A and B as such that A less or equal to X less or equal to B, where closed interval AB is always subset of real number. मान लो कि आपकी रियल लाइन है, यहाँ पे है B और यहाँ पे है A, इसके बीच में कोई भी जगह पे X है। So dear friends, आपको कैसे कंसीडर करना है closed interval? मतलब your X is lies between A and B। मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक फॉर्मूला में बताया था इक्वालिटी और इक्वालिटी, that we have to discuss earlier lecture. So your X is lies between A and B. So यहाँ पे X की वैल्यू A से स्टार्ट होती है B तक, तो आप X की वैल्यू A से लेके B तक ले सकते हैं। The X which are equal to A or greater than X, and X which are equal to B or less than B. That means your X starts from A ending with B, and all the values which are lies between A and B. तो आपको कैसे याद रखना है? तो जब आपके पास लेस देन और इक्वल टू है तो आपको यहाँ पे क्लोज इंटरवल करना है, और सेम कंडीशन यहाँ पे आपके पास मान लो कि इतना ही है तो आपको इसको ओपन इंटरवल करना है। क्या करना है? ओपन इंटरवल करना है। मैं आपको बताऊं कि रियल लाइन है, सपोज x, सो 3 and 7, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 से स्टार्ट करके 7 तक कंसीडर करता हूँ, इट इज आल्सो 3, इट इज आल्सो 7, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x belongs to 3 to 7, दिस इज क्लोज इंटरवल। बट वी कैन टेक इफ x belongs to 3.1 to 6.999, not this 7, so that means from this case we can write x belongs to 3 to 7. In this case, we cannot consider x is 3 and x is 7, but we can consider only the values which are lies between 3 and 7. I repeat it again. The value x equal to 3 and x equal to 7 and lies between 3 and 7, that is called the closed interval. And the value which are lies between only 3 and 7, not this 3, not this 7, starts from 3.1 to 6.999. That is called open interval. So closed interval is denoted in square bracket. The closed interval का symbol है minus और round bracket. That is open interval. So dear friends, JEE में कई बार मैं आपको बता दूं कि open interval ऐसे भी डिफाइन करते हैं। ऐसे मान लो कि A B ये ओपन इंटरवल, सो बोथ आर द सेम। अगर आप ऐसे लिखो ओपन इंटरवल ए बी और आप ऐसे लिखो बोथ आर सेम, तो कई रेफरेंस बुक में ऐसे भी सिंबल यूज किया है। दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्लोज ओपन में क्या रहेगा? सिमिलर मेथड, क्लोज तो यहाँ पे ओपन कर दो, तो यहाँ पे इक्वल टू निकाल दो। सो x स्टार्ट्स फ्रॉम A बट नॉट B। x की वैल्यू A से कंसीडर करते हैं लेकिन B कंसीडर करता नहीं है। ओके, तो x स्टार्ट्स फ्रॉम A टू B। व्हाट इज ओपन क्लोज? तो ओपन क्लोज के लिए यहाँ पे क्लोज कर दो, जहाँ पे क्लोज करोगे वहाँ पे इक्वालिटी रहेगी, और जहाँ पे क्लोज नहीं करोगे वहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा। क्लियर? सो यहाँ पे आपने पूरे लेक्चर में इस सब इंटरवल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ओपन क्लोज क्या करना है, क्लोज ओपन क्या करना है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि अगर कई बार आपके पास ऐसी इनइक्वालिटी है, देखो
कोई आपको ऐसे बोले कि 313 लेस देन x लेस देन 21, तो आप क्या लिखोगे? x belongs to 13 to 21, this is the open interval, but 15 less or equal to x less or equal to 19, तो आप लिखोगे x belongs to 15 to 19 close। तो दोनों में डिफरेंस देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्वल टू है तो क्लोज, इक्वल टू नहीं है तो ओपन। सेकंड थिंग, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है तो आपको माइंड में एक बात याद रखनी है कि बाउंड्री कंसीडर करनी है। क्लोज इंटरवल है तो बाउंड्री कंसीडर करनी है, और ओपन इंटरवल है तो बाउंड्री कंसीडर करनी नहीं है। ओके, चलो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 7, 10, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है तो x की वैल्यू में 7 ले सकता हूँ, लेकिन 10 के आगे की जो वैल्यू है 9.9999 वो कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। क्लियर? चलो यहाँ पे तो ये हो गया आपका क्लोज ओपन, कौन सा हुआ? क्लोज ओपन, ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आज फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक समझ बता दी सेट थियरी की। एक लेक्चर और उसके बारे में थोड़ी बहुत फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। एक करने का एक ही रीजन, आई नो वेरी वेल ऑल यू आर फैमिलियर विद ऑल दिस फॉर्मूला, ऑल यू आर फैमिलियर विद ऑल दिस फॉर्मूला, बट द रीजन इज, एक बार कोई भी चैप्टर के जेएलएल के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ये मेथड है, पूरे चैप्टर की समझ में मेरे हिसाब से आप